Hi friends, how are you doing today? Thanks for following my YouTube videos and I'm grateful that you are liking the ideas of the new cue cards that I'm sharing with you and I'm getting lots of requests. I hope you have the patience because it's not that easy to come up with new videos because it takes a lot of time to edit the videos. That's why we have the speaking booster where you can get instant access to most new cue cards. You're watching YouTube channel Arts Coaching and in today's video I'm going to share sample answer to one of the most important cue cards, that is talk about a time when you use your imagination. When it was, where you were, what you thought of, what was the situation, how you used your imagination and how it helped you. So before I start to discuss the idea behind this cue card, I request you to please subscribe this channel, help me to grow more. And along with subscribing my YouTube channel Arts Coaching, I highly recommend to download Arts Coaching application as well, as it is going to help you greatly in your Arts preparation. So let's quickly discuss the idea behind this cue card. Thing is that you have to use your imagination. Imagination का मतलब कुछ imagine करना, अपने दिमाग में कुछ visualize करना. What is a realistic idea for you to discuss for this cue card? I always recommend come up with something very simple that you can easily elaborate. और यहाँ पर मेरे पास कुछ ideas हैं. One can be कि आप जब छोटे थे तो उस टाइम किसी फ्रेंड या किसी अपने रिलेटिव के घर गए थे और काफी सालों के बाद आपको जब दोबारा जाना पड़ा तो आपका एड्रेस या आपके पास उनका फोन नंबर था लेकिन फोन बैटरी फ्लैट हो गई, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था दैट हाउ यू गेट और रीच टू देयर हाउस, बट आपने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया. लेकिन ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद बना लीजिएगा. मेरे पास एक डिफरेंट आइडिया है जो आपको ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा, where you painted something using your imagination. हम कहेंगे कि स्कूल डेज से ही मेरी पेंटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है and I have taken part in many school competitions related to painting. लेकिन एक बार का टाइम था जब आप काफ़ी बीमार थे, आप जब काफ़ी दिनों के बाद जब स्कूल गए तो आपको पता चला कि आज एक कंपटीशन है दैट इज ऑफ पेंटिंग. आप बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं थे बट यू टुक पार्ट इन इट. अभी क्या है कि जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आए थे, तो इस टाइम आपने डिसाइड किया कि आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करेंगे टू पेंट समथिंग. सो दिस वॉज द टाइम जब आपने रियलाइज किया कि आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है टू कम अप विद अ वंडरफुल पेंटिंग. क्योंकि आपको एक बिल्डिंग है जो बहुत पसंद है, वो अपनी मर्जी की आप कोई भी रख सकते हैं, ताजमहल रखिए, कुतुब रखिए, और मैं यहाँ पर गोल्डन टेम्पल की बात करने जा रहा हूँ जिसका एक स्ट्रक्चर बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आप काफी बार विजिट भी कर चुके हैं. सो एट दैट टाइम यू डिसाइडेड कि आप golden temple की पेंटिंग बनाएंगे. So you were thinking about it and as you were perceive करना, जैसे जैसे आपके माइंड में उसके बारे में कुछ आ रहा था वैसे वैसे आप पेंट करते जा रहे थे, ड्रॉ करते जा रहे थे. आपने पहले स्ट्रक्चर डिजाइन की, अकॉर्डिंगली आपने वाटर कलर्स उसमें भरे, आपने मेन स्ट्रक्चर्स भी बनाए और आपने माइन्यूट डिटेल्स का भी ध्यान रखा. और जब आपकी ये पेंटिंग कंप्लीट हुई तो देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी. आपके टीचर्स ने आपको अप्रिशिएट किया. इनफैक्ट दे अप्रिशिएटेड योर सेंस ऑफ इमेजिनेशन मोर देन द पेंटिंग इटसेल्फ. एंड यही रीजन है कि आपको फर्स्ट प्राइज भी मिला. एंड दैट वाज द टाइम. If you really like this idea, continue to watch the video because I'm now going to share the sample answer with you. Guys, before I actually start the sample answer, I would like to recommend you to buy Speaking Booster. It's an amazing electronic book. The first ever book for arts that helps students in their arts preparation, which is a live book. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको प्रीवियसली बाय किया एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, नाउ दे आर गेटिंग फ्री अपडेट्स. विद इन couple of days हमारे ये सारे फॉलो अप्स भी अपलोड हो जाएंगे और ये सारी स्टूडेंट्स के लिए अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी. दो इसका बुक का प्राइस अब 500 हो गया है एंड विद इन अ वीक और सो इसको हम 600 कर देंगे as soon as you have all the updates. The beauty of this book is चाहे आप अभी इसे बाय कर रहे हैं लेकिन आपके पास ये वैलिड रहेगी फॉर द नेक्स्ट 6 months. दैट मींस 6 months तक आप इस बुक को रीड कर सकते हैं
और ईज ऑफ एक्सेस देखिए कितना है कि ऑल टाइम ये बुक आपके पास आपके मोबाइल फोन में है. यू डोंट हैव टू वेस्ट और स्पेंड मनी ऑन बाइंग अ हार्ड बुक. इनफैक्ट ऐसी बुक्स आप बाय तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्यू कार्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स का जिनका एग्जाम दिसंबर में क्लियर नहीं हुआ, तो अब उनको दोबारा से वो बुक बाय करनी पड़ती है. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट अपडेट्स जो अप्रैल ऑनवर्ड्स आएंगे, आई होप तब तक आपका एग्जाम क्लियर हो. इन केस यू वुड बी लुकिंग फॉर अपडेट अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एज वेल जिन्होंने अभी स्पीकिंग बूस्टर बाय नहीं किया है. तो आइए मैं आपको जल्दी से बता दूं इस स्पीकिंग बूस्टर को अगर आपको बाय करना है तो करना कैसे है. You can find the sample answers to all the questions in Speaking Booster. IELTS Speaking Booster, a book written by Ramandeep sir, is available on IELTS coaching application. Download IELTS coaching application if you are an Android user. And if you're an iOS user, download ClassPlus and then enter ORG code IELTS. Make sure you register as a student, not as a parent, and click on Store at the bottom. Now you will see Speaking Booster, and all that you need to do is make the payment to unlock the book. It's an electronic version that would give you access 24/7. Even if you're not in India, you can easily buy this book, make the payment in Indian rupees. It would be automatically converted in your currency. The beauty of this book is that it gets updated automatically so that you don't have to buy any speaking book again and again. So well, I hope आपने देखा कि स्पीकिंग बूस्टर को बाय करना कितना इजी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्यू कार्ड का सैंपल आंसर. Well, it's very important to make use of our sense of imagination as it reflects our intelligence as well as creativity. I often make use of this power, and now I would like to talk about a time when I drew a painting using imagination. Right from my school days, I have a deep interest towards art, and I have taken part in many painting competitions at school level. I will remember when I was in 8th grade and I fall seriously sick. I was not attending school for a while, and during this time, my school organized a painting competition. I was completely unaware about the date of this contest, and I had no preparations at all. The day after recovering, I went to school. I got to know that the painting competition is going to happen today. My old friends who were taking part in this competition, they were quite confident as they were well prepared, and they were saying that this time we are going to beat you because you are not prepared for this contest at all. Well, rather than getting nervous, I decided that I will come up something in my mind and I will make a painting. So the competition started, and all the painters have to come up with a painting in 1 hour time. Now, at this point, I decided I will make a painting of Golden Temple using my imagination. It's a beautiful building, and I had visited this place few number of times, so I was quite aware what it looks like. So now I started painting as I was visualizing, for example, the Sanctum Sanctorum, the Holy Pond, and the other things. At the same time, I painted it with the realistic colors. For example, I chose golden for the prime structure and blue to represent the water in the pond. In 1 hour, I completed, and it was looking stunning. My teachers really appreciated me, not only the painting, but my sense of imagination that really helped me to draw this wonderful piece of art. Since it was best among all, so I was also honored by my teacher with a reward, and my friends were looking completely clueless that how I won it. Overall, it was one time when I used my imagination. And that's it. I hope you too make use of imagination. I also try to imagine that how you will appreciate the ideas of cue cards that I share with you. Well guys, it is time for you now to tell me in the comment section that which cue card should I prepare next. And right now, I say goodbye. Take care of yourself.